Hello, aspirants. Welcome to Science and Tech course by UPSC Experts. See, we are starting with space. See, this is part one of space. See, under space, we are going to discuss following topics. So, we'll be discussing Big Bang Theory, we'll be discussing cosmic microwave background radiation, dark energy, dark matter, dark energy, galaxies. We'll be discussing about Milky Way galaxy, right? And we'll be discussing about supernova, white dwarf, neutron star, black hole, gravitational waves, neutrinos, theory of relativity. We'll be discussing then time dilation, gravitational lensing, solar system, asteroids, meteoroids, comets, Kuiper belt, Oort cloud, right? All these things we'll be discussing under space, right? So every year, at least one or two questions are asked from these topics in the prelims examination, and in mains also they are asking questions from this topic, right? So let's start with the topic. See, first is universe. See, what is universe, right? So universe is the everything, right? Entire thing which we can see, which we cannot see, we'll be discussing, right? That is universe, right? Universe. See, first, let's understand, like, see, our solar system, we know, right? Our solar system, say, solar system has sun at the center, right? And the sun is orbited by planets, right? There are eight planets which are orbiting our sun, right? So that is our solar system. And like that, in a galaxy, right? See, galaxies, say, we are living in a Milky Way galaxy. Milky Way galaxy, right? So Milky Way galaxy has billions and trillions of suns and their solar systems. हर सन है, राइट? हर सोलर सिस्टम में, से in our Milky Way there are billions, right? Say there are 100 of billions of stars, right? जैसे सन है वैसे hundreds and billions of stars are there, right, in our Milky Way galaxy, right? So and उस सन के अराउंडिंग ऑर्बिटिंग देर आर planets, right? So there are, like, जैसे planets भी है 100 into say 7, right? That many planets are there. And in the universe, say, ये गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, राइट, देर आर billions of suns and billions of other planets, right? And in the similar way, in the universe, there are trillions of trillions of galaxies, right? So there are trillions of galaxies. So trillions of galaxies make, say this is one galaxy, right? Say this is another galaxy. So we'll be discussing, so galaxies shapes kya hai, all these things, right? So and there are, say this is one galaxy, say this is another galaxy. Like this, there are trillions of galaxies, right? So in trillions of galaxies, right? In trillions of galaxies, there are trillions and billions. See, some galaxies, say Milky Way galaxy has stars in billions, and some galaxies also have stars in trillions. That is, there are trillions of suns there, right? And sun se to suns ke surrounding orbiting, there are trillions of planets, right? So in a universe, there are trillions of galaxies, and in the those galaxies, there are billions and trillions of stars and planets. So अगर मान ले, that does aliens exist, right? Does aliens exist? What is the probability, right? So there are trillions of earth like planets, earth like planets, that is, like, planets which are in Goldilocks zone, right? एरिया जहां टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर कम भी नहीं है, right? There are trillions of earth like planets. So there is a chance that there might be aliens existing, right?
and it is a debate कि aliens exist, right? Whether अगर aliens है तो they are advanced civilizations or not, right? So we won't be going into that. ठीक है, हमें वो important नहीं है whether aliens exist or not. But what we need to understand is there are trillions of suns and there are trillions of planets, right? Right, that is a universe, and the trillions of galaxies are there, and the trillions of galaxies is what makes the universe, right? Right, so we'll be slowly understanding everything, right? So अगर अभी कुछ भी doubts है तो by the end of this space part you will be cleared with all the doubts. जैसे अभी हो सकता है कि galaxies में क्या है, right? All these things slowly we'll be dealing with one by one, right? Now let's understand. So what we understood by universe, right? Universe is collection of galaxies, right? There are trillions of galaxies in the universe, right? And in each galaxy there are trillions and billions of stars, right? And each star is surrounded by planets, right? Planets, asteroids, meteoroids, right? All those things we will be studying. So that is universe. Now one thing we need to understand is what is the shape of universe, right? See, universe hai, right? Whether it is flat, whether it is round, or whether it is this open ended shape, right? What is the shape of universe, right? Universe ka shape kya hai, right? See, this universe can be round, right? And universe can be flat, like जैसे बाकी stars है, right? We when we look into the sky we see stars, right? Are they part of some flat structure, right? Or जैसे earth is spherical in shape, क्या universe भी spherical है, right? Or it is in this shape, right? The answer is we don't know, right? We don't know because we cannot see the complete universe, right? हम कंप्लीट यूनिवर्स को देख भी नहीं सकते, राइट? इवन विथ माइक्रोस्कोप्स, इवन विथ टेलीस्कोप्स, राइट? इवन विथ एवरीथिंग वी हैव, वी कैनॉट सी. व्हाई वी कैनॉट सी? बिकॉज यूनिवर्स इज very vast, right? Universe is very vast, and most importantly universe is expanding. Say अभी universe इतना है, right? So हो सकता है in next some years universe might be this big because universe is expanding. Universe is constantly expanding. Since its birth universe is expanding, right? Universe is continuously expanding and continuously accelerating, right? अभी with time, right? मान ले फिर next 10 years के बाद universe हो सकता है इतना बड़ा हो, right? Right? Or if it is flat हो सकता है इतना बड़ा हो, right? So all the things, right? Universe is expanding and expanding at a speed more than speed of light, right? We will be discussing that, right? Only one thing is traveling speeder than light, like they say speed of the light is limit, right? All those things we will be discussing, but the universe is expanding faster than speed of the light. जैसे मान ले इधर है इतना यूनिवर्स है, राइट? आफ्टर सम इयर्स इट विल बी दिस मच, इट विल बी दिस मच, इट विल बी दिस मच. इफ वी अज्यूम इट इज सर्किल, राइट? यूनिवर्स एक सर्किल शेप में है तो ऐसा एक्सपैंड होगा, राइट? बट वी डोंट नो द शेप ऑफ यूनिवर्स, वी डोंट नो, राइट? और साइंटिस्ट ने अभी तक कैलकुलेट करके द यूनिवर्स इज वन ऑफ दीज थ्री शेप्स, राइट? इन तीन शेप्स में या तो क्लोज्ड हो सकता है, राइट? या तो ओपन इस शेप में हो सकता है यूनिवर्स, और इट कैन बी फ्लैट, राइट? फ्लैट वेयर स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल आर स्प्रेड लाइक दिस, राइट? कुछ भी हो सकता है. इन तीन शेप्स में पॉसिबल है. क्या शेप है एग्जैक्टली वी डोंट नो, राइट? वी डोंट नो, सिंपली वी डोंट नो, राइट? That is a universe shape. Now, so we are discussing universe shape, right? First, we need to understand कि universe का जन्म कैसे हुआ, right? Origin है, right? या कैसे शुरू हुआ, right? Regarding that, we have some information, that is origin of universe. Origin of universe.
we can explain it with respect to Big Bang theory. Big Bang theory is the one of the most well accepted theory regarding the evolution of universe. Right? Regarding the evolution of universe. That is, what does Big Bang theory says? Right? See, that is, universe started from a small point. Right? Universe started from a point. So that means universe has a beginning. So this one, that is, universe had had beginning beginning. It is suggested by Einstein. Right, it is suggested by Einstein theory of relativity. He suggested that universe had a beginning, right? And that beginning is, when did it begin? It began 13.8 billion years ago. Right? So 13.8 billion years ago, universe had begun. Right? So we'll be understanding each and everything. Right? See, universe, right? In Big Bang theory, so universe had a beginning. It started at 13.8 billion years ago. Right? 13.8 billion years ago. फिर कैसे शुरू हुआ? Right? कैसे stars आया? That we'll be studying under Big Bang theory. So let's read about the timeline of Big Bang. Right? Timeline after Big Bang. So before Big Bang, what happened? That is 13.7 billion years ago. Right? 13.7, somewhere it is given 13.8. Right? Both are right, fine only. So 13.8 बिलियन ईयर्स एगो क्या है, यूनिवर्स जो इससे भी छोटा, राइट, जो अपने नेक्ड आई में हम देख भी नहीं सकते. सो एंटायर यूनिवर्स इज इन ए सिंगल एटम, राइट, साइज में है. राइट, सिंगल एटम साइज में था. दैट इज बिफोर बिग बैंग. राइट, सो एंटायर मैटर is consolidated in a single point. That single point is called singularity. Right? That single point is called singularity. Right? That is before Big Bang. Right? Before Big Bang happened, the entire universe is small atom. Right? जिसे ये डॉट है, इससे कुछ बिलियन टाइम्स छोटा. राइट, उसमें पूरा मैटर कंप्रेस हुआ. राइट, एंड व्हेन द कोई भी मैटर इतने कंप्रेस हुआ, सो दिस इज इन्फिनिटली हॉट. राइट, इन्फिनिटली हॉट. राइट, जो एटम में काफी गर्मी थी, एंड इट इज इन्फिनिटली डेंस बिकॉज टू मच ऑफ मैटर इज कंप्रेस्ड इन ए स्मॉल थिंग. राइट, जैसे मान ले बॉल है. राइट, से यू हैव ए से कॉटन बॉल. राइट, कॉटन बॉल. राइट, सो यू प्रेस्ड इट, इतना बड़ा बॉल है, यू मेड इट दिस मच. राइट, स्मॉल पॉइंट. So that will be infinitely dense. So similarly, the entire matter, so much of matter is compressed densely. So there is infinitely hot here and infinitely dense, because matter is compressed. Infinitely dense, इतना dense है, you cannot even imagine. जिसे द सन, अर्थ, एक्सेट्रा, ठीक है, उनका मैटर है, उनको ऐसा कंप्रेस करके एक छोटा सा डॉट में लाया. राइट, दैट विल बी इन्फिनिटली डेंस. सो इट इज एट सिंगुलैरिटी इन्फिनिटली डेंस, एंड देयर इज इन्फिनाइट ग्रेविटी. इन्फिनाइट ग्रेविटी. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटी क्या है, दैट वी विल बी स्टडीइंग. राइट, सो at singularity, that is before Big Bang happened, right, before Big Bang happened, the entire matter of the universe is compressed in a small atom like point. Right, that we call it as singularity. In that singularity, there is infinitely hot, infinitely dense, and there is infinite gravity. Right, then what happened? There is a Big Bang. Right, there is blast. Right, जब एक मैटर, एक छोटा, उसमें जितना सारा डेंसिटी हुआ, इतना ज्यादा हॉटनेस, इतना ज्यादा ग्रेविटी, एट ए सडन देयर वाज ए blast. Right, there was a blast of this atom. Right, blast of this atom, and
when that happened, so first point we know is the Planck time. Planck time जैसे 13.7 बिलियन ईयर्स ago ये हो रहा था बिग बैंग, सो ब्लास्ट हुआ, राइट एकदम से. सो देन जब भी ब्लास्ट हुआ बिग बैंग का, बिग बैंग के बाद 10 to the power -43 seconds, that is 0.00000 so on till 0 43 times, right? 43 times 1 seconds में, right? 1 seconds after the big bang blast के 0.00001 seconds बाद, right? That time we call it as Planck time. See, these things there is no need to remember, right? इतना important नहीं है, but we can understand many things. That's why इनको समझने की कोशिश करो, right? बिग बैंग के बाद 0.00041 zeros 0.1 seconds के बाद, right? We have what we call it as Planck time, right? Planck time, right? And when Planck time happened, see temperature, see singularity में infinitely hot थी, इधर 10 to the power 32 degrees Celsius, right? Temperature is 10 to the power 32 degrees Celsius. That means it is very hot, right? अब इधर से तो hotness कम है, because इधर it is infinitely hot. We cannot even imagine कितना hot है, right? But here it is 10 to the power 32 degrees Celsius. अब कितना hot है 10 to the power 32 means 10 times 0 लिखेंगे, right? उतने डिग्री सेल्सियस, right? अब कितना गर्म है, जस्ट इमेजिन. सी जो सन है, सन के सरफेस में टेम्परेचर इज 5000 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड सन का कोर में टेम्परेचर वुड बी समवेयर से 1 लाख डिग्री सेल्सियस, राइट? सो अब ये सन के सरफेस में 5 जैसे फ्लेम है, जो अपने किचन में आग जलती है, राइट? उसके आग का सरफेस वुड बी सम 1500 डिग्री सेल्सियस, राइट? 1500 डिग्री सेल्सियस. सो जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत सेकेंड्स के बाद 10 to the power 32 डिग्री सेल्सियस हॉटनेस थी, राइट? देन this is the earliest known time that can be described by modern physics, right? So this is Planck time. Planck time, right, is the earliest known time described in the physics, right? So that is the first thing which happened, right? That is soon after the Big Bang. So temperature is 10 to the power 32 degrees Celsius, right? And here the energy, right? Energy is 10 to the power 19 giga electric volts, right? Giga electric volts. जैसे इसको समझने के लिए प्रेजेंट यूनिवर्स से समझते हैं, राइट? सी दिस इज जस्ट आफ्टर बिग बैंग, द टेम्परेचर इज 10 to the power 32 डिग्री सेल्सियस. प्रेजेंट टेम्परेचर, प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स, एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स दिया जाए तो दैट इज -270 डिग्री सेल्सियस, -270 डिग्री सेल्सियस, राइट? मतलब काफी ठंडा है अभी यूनिवर्स का, राइट? जैसे अर्थ में लीस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज -82 डिग्री सेल्सियस, राइट? अंटार्कटिका में, राइट, लीस्ट रिकॉर्डेड. सो प्रेजेंट द यूनिवर्स इज वेरी कोल्ड, राइट? जैसे अंटार्कटिका में -82 डिग्री सेल्सियस है, अब देखो -270 डिग्री. सो यूनिवर्स इज प्रेजेंट प्रेटी कोल्ड, राइट, when compared to Big Bang के बाद, right? And present energy is 0.25 electric volts, right? So कहा 10 to the power 19 giga electric volts और कहा energy is 0.25 electric volts, right? So that means soon after Big Bang the temperature is very hot and the energy is very high. Energy high इसीलिए because the matter is compressed, right? So high, right? So now फिर आते, so that is 10 to the power -43 seconds Planck time. And then what happened? 10 to the power -35 seconds, that is 0.0000035 zeros, right? 35 zeros 1.1 seconds के बाद after the Big Bang, right? So the temperature is
10 to the power 27 degrees Celsius, right? 10 to the power 27 degrees Celsius, right? So if we see, the temperature started reducing, right? 10 to the power 32, right? So इधर आ गया 10 to the power 27 degrees Celsius, right? अब 10 to the power 27 degrees Celsius, see, अब इतना गर्म है, right? इतना गर्म है, right? So इधर the atoms, we know, right? Atoms, see, atoms के लिए हमें चाहिए न्यूक्लियस, राइट? एंड एटम्स के लिए न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दैट इज द एटम, ठीक है? हर चीज एटम से ही बनती है, राइट? जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, राइट? ऑल द एटम्स, लिथियम, राइट? ऑल द एटम्स आर देयर, हर कोई एटम हैज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म होंगे, राइट? एट सर्टेन टेम्परेचर, जैसे अब 10 टू द पावर 27 डिग्री सेल्सियस में देर कैन नॉट बी एटम्स, एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, राइट? जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, जैसे सन में द टेम्परेचर इज से 1 लाख डिग्री सेल्सियस, 1 लाख डिग्री सेल्सियस, राइट? देर ओनली हाइड्रोजन and helium or other atoms can exist, right? जो भी कोई भी टेम्परेचर में, मान ले गोल्ड को हम 1 लाख डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, राइट? सो गोल्ड गोल्ड ही नहीं रहेगा, राइट? सो एट दिस टेम्परेचर, दैट मीन्स आफ्टर द बिग बैंग, 10 टू द पावर 35 सेकेंड्स ऑफ द बिग बैंग, सो देर आर नो एटम्स, एटम्स अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ. What are there? There are quarks, there are leptons along with their antiparticles formed. See, अब quarks क्या है? See, atoms has nucleus, right? And electrons, right? हर एटम में जो एटॉमिक नंबर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह वो चेंज होता है. एंड न्यूक्लियस हैज, सी दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons, right? Nucleus is made up of protons and neutrons. ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है. देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड, भाई ये प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल सब पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड क्वार्क्स, राइट? क्वार्क्स. सो प्रोटॉन है, ठीक है? प्रोटॉन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए 3 quarks, right? So proton is made up of 3 quarks, right? And a neutron is also made up of 3 quarks, right? So basically the entire universe is made up of subatomic particles, that is quarks and electrons, right? So ये standard model of physics में we will be studying, right? So that is 10 टू द पावर 27 डिग्री सेल्सियस में अभी तक एटम्स बने नहीं है, राइट? दैट मींस देयर आर क्वार्क्स एंड leptons and their antiparticles are formed, right? Then there is 10 to the power 35 to 10 to the power minus 33 seconds, that is 0.00035 zeros to 33 zeros 1 seconds after the big bang, right? तो उसमें फिर टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ, दैट इज 10 टू द पावर 25 डिग्रीज, राइट? नाउ उसके बाद क्या हुआ? इन्फ्लेशन, दैट इज साइज ऑफ यूनिवर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 30 टू 10 टू द पावर 40. अब देखो, ठीक है, बिग बैंग में, जब बिग बैंग से पहले ये एक डॉट थी, एंटायर ये इस डॉट में ऑक्यूपाइड थी, राइट? विल बी ड्रॉइंग, ठीक है? सो द बिफोर बिग बैंग entire universe is compressed in this dot, right? Then let's draw, see, universe is say big bang started here, right?
Big Bang started here. See, that is 13.8 billion years ago. 13.8 billion years ago. Right? So then after that, we are talking about Planck time, right? So that is Big Bang ka 10 to the power minus 43 seconds. Minus 43 seconds के बाद, see this is say Planck time, right? Planck time में टेम्परेचर कितना हो रहा था, we have seen. Then 10 to the power 35 seconds से the universe is like this, right? So blast हुआ, थोड़ा बढ़ गया, right? So this is at 10 to the power minus 35 seconds, right? And then it happened here there is, this is called cosmic cosmic inflation. Here the universe expanded by factor of 10 to the power. So अभी तक छोटा डॉट थी, तो इधर बन गया ये टेनिस बॉल जितना साइज. So now the universe, right? This is after what? How many seconds? That is 10 to the power minus 35 to 10 to the power minus 33 seconds after the Big Bang. अभी हम यूनिवर्स का बर्थ हुआ, राइट? एक सेकंड तक भी नहीं पहुंचा, राइट? सो एक सेकंड भी तक भी नहीं पहुंचा. सो द यूनिवर्स हैज बिकम टेनिस बॉल साइज. सो दैट increase from small dot to tennis ball size is called as cosmic inflation, right? इधर हम काफी कम टाइम स्केल में देख रहे हैं, राइट? सो यूनिवर्स हैज इंक्रीज्ड. देन लेट्स कम टू 3 minutes के बाद यूनिवर्स इज हियर, राइट? सो दिस इज 3 minutes, राइट? सो अब जब साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ, राइट? क्वार्क्स leptons एक दूसरे से टकरा रहे, राइट? एंड दिस हैपेंड. देन 3 minutes after Big Bang, 3 minutes after the birth of universe, right? So then we have seen formation of nuclei, right? Formation of nuclei of the lightest atoms like hydrogen, right? And helium, right? हाइड्रोजन हीलियम का एटम्स मतलब न्यूक्लियस विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. सो अभी 3 minutes after the universe we have seen birth of atoms, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह फॉर्म होने लग गया 3 minutes after the Big Bang or 3 minutes after the birth of universe, right? So now universe size has become this, right? फिर जैसे जैसे इधर से, सो एज वी सी यूनिवर्स का साइज बढ़ते ही जाएगा, राइट? सो वी हैव रीच्ड 3 minutes after the birth of universe or 3 minutes after Big Bang, right? So the temperature has dropped to 10 to the power 9 degrees Celsius. So as the universe age is increasing, right, temperature is decreasing 10 to the power 9 degrees Celsius. That is 10, 1 followed by 9 zeros, right? Degrees Celsius, right? So here the nuclei of the lightest elements, hydrogen and helium, started to form, right? So protons and neutrons unite to form the nuclei of atoms. So जो भी protons और neutrons है वो unite हुआ शुरू कर दिया. जैसे टेम्परेचर कम हो गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थोड़ा स्टेबल आने लग गया, फिर कनेक्ट दे एटम्स. जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉलोड बाय 1 इलेक्ट्रॉन. जैसे हीलियम है, राइट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्जेस है, राइट? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट? सो लाइक दैट वी हैव सीन. देन it is happening at 3 minutes, and 3 minutes के बाद slowly other atoms also started forming, right? As universe is expanding, the temperature started decreasing, right? So then comes 3 lakhs years after the Big Bang. So 3 lakhs years after the Big Bang, now the temperature has reached 10,000 degrees Celsius. 10,000 degrees Celsius. And here when say we have seen the light can finally shine, right? अभी तक जैसे यूनिवर्स में
3 लाख ईयर्स तक, 3 लाख ईयर्स तक भाई लाइट कहां से आएगा? व्हेन हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होगा, जैसे सन में, राइट? सन इज कन्वर्टिंग हाइड्रोजन टू हीलियम, राइट? उससे लाइट आएगा, राइट? अभी तक हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट ही नहीं हो रहा था. सो slowly say it is at a 3 lakh years after the big bang, right? So 3 minutes say we have come 3 lakh years. So slowly light started forming, right? So that means 3 lakh years say light came to be known for the universe, right? So light aa gaya, right? Right, light has come to know. Now see what happens is, actually say sun hai, say this is sun, right? So sun say earth is say 150 million किलोमीटर्स डिफरेंस है, राइट? एंड सन से क्या लाइट एमिट होता है, राइट? कोई भी स्टार है, इट इज एमिटिंग लाइट, राइट? सो द लाइट विच वी आर सीइंग इज सन का लाइट, एंड सन्स लाइट takes say 8 minutes, 8 minutes to reach earth, right? जैसे मान ले इफ सन फर्स्ट जब भी लाइट एमिट हुआ, राइट? सन लाइट एमिट किया, राइट? टू रीच आवर अर्थ इट टेक्स 8 minutes. दैट मीन्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट is constant, right? That is 3 lakh kilometer per second, right? So speed of the light is a limit, right? Light से ज्यादा स्पीड यूनिवर्स में कुछ हो ही नहीं सकता, right? This is the core fact of physics. आइंस्टाइन ने यही एस्टैब्लिश किया, right? Speed of the light is the maximum speed of the universe, right? अब क्यों है? Because light has mass of 0, right? light is nothing but photon का waves है, right? So mass 0 है, and anything with mass cannot travel with speed of light. That is a fact. किसी का भी, so कोई भी पार्टिकल है, राइट? कोई भी पार्टिकल से आप एक बॉल थ्रो किया, राइट? एंड बॉल स्पीड ऑफ द लाइट के स्पीड में कभी जा ही नहीं सकता. जैसे बॉल कभी भी हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से तेज फेंक ही नहीं सकता, कितना भी टेक्नोलॉजी हो, राइट? क्योंकि यूनिवर्स का लिमिट है स्पीड ऑफ द लाइट, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट विथ मास कैनॉट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, एंड एवरीथिंग विदाउट मास, राइट? कोई भी चीज मास नहीं है उनके अंदर, it can travel at the speed of light, right? So that is the fact. Now sun से light travel कर रहा है, right? So travel 3 lakh kilometers every second, right? So 150 million kilometers travel करने के लिए it will take say 7 minutes, 8 minutes, right? So that is with respect to speed of the light, right? So अभी एक्चुअल क्या है, यूनिवर्स से हम लोग से यूनिवर्स शुरू हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, राइट? नाउ इफ वी आर 13.8 बिलियन ईयर्स अवे, राइट? 13.8 बिलियन ईयर्स अवे, राइट, फ्रॉम सम पॉइंट. सो जो लाइट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, जैसे मान ले 13.8 बिलियन, जैसे बिग बैंग पे तो लाइट है ही नहीं, राइट? सो लाइट फॉर्म हुआ 3 लाख ईयर्स के बाद, राइट? सो आफ्टर 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, ठीक है, जो भी हुआ हम अभी देख सकते हैं, राइट? से मान ले दूर का सन है, राइट? सो सन विच इज फार अवे फ्रॉम अस, राइट? जो ये सन है, दिस इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. से कोई सन है बिलियन light years away from us, right? So वो billion, basically the sun which we are seeing now, right? अभी जो सन हम देख रहे हैं that is 7 minutes away का, right? 7 minutes पुराना सन देख रहे हैं हम, right?
जो मान ले कि बिलियन लाइट ईयर्स अवे पे है, सो वी विल बी लुकिंग एट बिलियन ईयर्स ऑफ दैट स्टार, राइट? जो बिलियन साल पहले मान ले हम सुपरनोवा, एक सन का ब्लास्ट हुआ, राइट, विच वी कॉल इट एज सुपरनोवा, वो भी पढ़ेंगे, राइट? अगर वो बिलियन साल ईयर्स पहले हुआ, राइट, अब उसका ब्लास्ट का लाइट हमारे तक पहुंचने में बिलियन साल लगा, तो वी आर लुकिंग इट एज 1 बिलियन ईयर्स पास्ट, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, जो बिग बैंग के 3 लाख साल के बाद जो हुआ, लाइट एमिट हुआ, वो अभी हम देख सकते हैं, राइट? बिकॉज बिलियन साल दूर है तो, राइट? जस्ट अगर समझ में भी नहीं आया तो विल बी डिस्कसिंग इट, वेल विल डिस्कस अबाउट लाइट, देन यू विल अंडरस्टैंड, राइट? अभी टाइम स्केल पे फोकस करते हैं। सो 3 लाख ईयर्स, राइट, आफ्टर बिग बैंग लाइट स्टार्टेड शाइनिंग, राइट? देन स्लोली स्लोली जैसे लाइट फॉर्म हुआ, एटम्स फॉर्म होने लग गया, राइट? स्लोली स्लोली 300 to 500 मिलियन ईयर्स से slowly stars started forming, and slowly galaxies started to appear, right? Then slowly 1 बिलियन ईयर्स के बाद गैलेक्सीज अच्छे से फॉर्म हुआ, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, राइट? 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, मिल्की वे गैलेक्सी, राइट? सन ऑल्सो फॉर्म्ड, जैसे अर्थ फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, राइट? So, right? So this is the time scale with respect to Big Bang. So see, let's see. Big Bang start hua, right? Say, let's imagine this is the starting point. So this is zero. That is when singularity is there, right? That is 13.8 billion years ago, right? 13.8 billion years ago, right? Then छोटे छोटे टाइम से we have seen. Then अब 3,80,000 years तक there is no light, right? So now light started appear here, then followed by dark ages, right? Then first stars started to appear, right? So stars like sun, right? Stars started to appear, that is 300 million years ago. Then 1 billion years ago, early galaxies appear, right? Stars से galaxies बना, right? All these things we will be studying. So these are galaxies, right? Then formation of solar system, right? 9 billion years, right? Then modern galaxies में अब देखो, so if we see continuously universe is expanding, right? So universe is expanding. So first इतना था, छोटा पॉइंट था, फिर धीरे धीरे universe is started to expand, right? So that's what Big Bang theory also suggests, that's what Einstein also suggested, right? So this is with respect to Big Bang theory and Big Bang theory का timeline, right? Now, so before this, let's go to the notes and we will study about the Big Bang, right? See, this is the notes, right? So you can download the notes by clicking on the link given in the description of this video, if the video is available on the YouTube, right? Right? So this is first we have Big Bang theory, right? So Big Bang theory is the most popular argument regarding the origin of universe is the Big Bang theory. So regarding origin of universe, right, is Big Bang theory. It is also called expanding universe hypothesis. Expanding universe hypothesis because universe is expanding constantly. Constant नहीं है, ये नहीं कि universe इतना है तो इतना ही रहेगा, right? Big Bang theory also says that universe is expanding. So आज इतना है, ठीक है, कल इतना बड़ा यूनिवर्स हो जाएगा, परसों इतना बड़ा हो जाएगा. So expanding universe theory or hypothesis, that is universe is continuously expanding, right? उसको अभी we will be studying how it is expanding, what are the proofs of it, right? Then so the Big Bang theory proposes that universe began from an infinitely hot and dense single point known as singularity about 13.7 billion years ago, right? So Big Bang theory यही बोलती है भाई यूनिवर्स शुरू में सिंगल पॉइंट थी, infinitely dense, right? Infinitely hot point थी, right? That is called
सिंगुलैरिटी, अगेन दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, राइट, सिंगुलैरिटी 13 पॉइंट, देन फिर ब्लास्ट हुआ जैसे हमने देखा, राइट, देन सिंगुलैरिटी क्या है वो मेंशन किया, सिंगुलैरिटी रिफर्स टू ए पॉइंट वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम ब्रेक्स डाउन, right, space time breaks down because the density is so hot, right, and the gravity is so high that space time break हो जाता है, right, वो आइंस्टाइन रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो तब स्पेस टाइम क्या है यू विल अंडरस्टैंड, राइट, नो नीड टू वरी, राइट, ब्रेक्स डाउन एंड द लॉस ऑफ फिजिक्स डू नॉट वर्क, राइट, लॉस ऑफ फिजिक्स जैसे लाइट है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, अदर फोर्सेस क्या काम करेंगे वो भी काम नहीं करेंगे सिंगुलैरिटी पे, right, it is point of infinite density and gravity, right, the center of black holes and the big bang are considered as a point of singularity, so point of singularity exists at the center of black hole, see black hole में भी, ठीक है, black hole से black hole is like this, right, so black hole में भी there is this one, it is called point of singularity, right, जहां पूरा mass is, see here it will have infinite density, right, and infinite gravity, right, that is light also cannot escape, so basically point of singularity exist at big bang से पहले and at the center of black holes also point of singularity, so that's why by studying black holes we can understand the origin of universe, or we can understand about the conditions existed before the birth of universe or before the big bang, right, right, then big bang singularity, ठीक है, big bang singularity का बात कर रहे हैं, so that is in the beginning all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball that is singular atom which we cannot see with the naked eye also, right, उतना छोटे में सब condense with an unimaginably small volume, right, small volume and infinite temperature and infinite density we have seen, right, that is big bang singularity में before big bang, right, small छोटा सा उसमें सब compressed infinite temperature and infinite density, then at the big bang the tiny ball exploded violently, this led to a huge expansion, right, this led to a huge expansion we have studied, as it grow some energy was converted into matter, energy को matter में convert हुआ, right, there was particularly rapid expansion within fractions of seconds after the big bang, thereafter the expansion slowed down, right, thereafter expansion within the first 3 minutes of big bang event the first atom began to form, so 3 minutes after the big bang event the first atom began to form, right, so 3 minutes हमने देखा, right, how hydrogen helium slowly started to form, right, उससे पहले atoms थे ही नहीं because temperature इतना ज्यादा थी atoms form ही नहीं हो सकते, right, as the universe expanded slowly universe expand हुआ, both the density and the temperature dropped, right, then within 3 lakh years from the big bang the temperature dropped to 4500 kelvins, right, 4500 degrees celsius and gave rise to atomic matter, the universe became transparent, atomic matter जैसे बन गया universe became transparent, that is light दिखना शुरू हो गया, right, then the idea that universe had a beginning was first suggested by general theory of relativity completed by Albert Einstein in 1916, right, Albert Einstein theory of relativity in 1916 suggested that by universe है इसका beginning है, right, that suggested, so beginning that again big bang theory भी यही बोला, so that is with respect to big bang, right, we have understood the concept, then next is evidence supporting big bang theory, right, अब जैसे बिग बैंग ये तो थियरी है, राइट, बिग बैंग इज ए थियरी, राइट, यूनिवर्स ओरिजिन हुआ, राइट, बिग ब्लास्ट हुआ, राइट, उससे पहले एक सिंगुलैरिटी में सब चीजें थी,
इस टाइमलाइन में ये फॉर्म हुआ, ये तो थियरी है. बट व्हाट आर द एविडेंसेस विच वी कैन से कि हाँ भाई ये थियरी मोस्ट राइट right most logical theory with respect to origin and birth of universe, right? वो क्या है? Right, that is, see, the observations supporting the Big Bang theory include the present day continuous expansion of universe, राइट. सो यूनिवर्स कंटिन्यूसली, बिग बैंग भी वही दिखा रही है भाई. यूनिवर्स कंटिन्यूसली, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, वो प्रूव किया साइंटिस्ट ने. सो दैट मीन्स यस, बिग बैंग इज करेक्ट, राइट. सो दिस इज फर्स्ट वन. एंड द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड थ्रू कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये दोनों प्रूफ से, राइट, विच सेज दैट यूनिवर्स है भाई, बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट, राइट. So let's study the first one, that is expanding universe, right? So हमने भी देखा, right? So that is universe is expanding, and universe is expanding. Not only it is expanding at an accelerated rate, right? Accelerated rate, जैसे ऐसा बढ़ते जा रही है, राइट. सो पहले छोटा थी यूनिवर्स, अभी इतना बड़ा हो गया, राइट. इफ वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे सर्किल में समझ लेते, राइट. सर्किल, यूनिवर्स सब तरफ बढ़ रही है, सब तरफ फैल रही है यूनिवर्स, राइट. यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. सो व्हाट इज द प्रूफ? सी पहले, सी एर्लियर साइंटिस्ट वर बिलीव भाई यूनिवर्स बना हुआ इतना ही है, राइट. जैसे मान इतना गोला यूनिवर्स है, इतना ही गोला यूनिवर्स है, राइट. उसमें हम कितना देख सकते हैं वो सब. एर्लियर साइंटिस्ट वर थिंकिंग यूनिवर्स इज कांस्टेंट, राइट. एर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट यूनिवर्स वाज स्टैटिक, राइट. जैसे सन है, जहां है उधर है, राइट. गैलेक्सीज है, उधर है, राइट. सो यूनिवर्स वाज स्टैटिक, ज्यादा दूर जा ही नहीं रहे, एक्सपैंड हो नहीं रहा है, राइट. However, in 1924, एडविन हबल, जो हबल टेलीस्कोप इनके नाम पे किया, एडविन हबल revealed that galaxies are moving away from each other. Galaxies are moving away from each other, and farther they are, the faster they are receding. Right? So अब आ गया, right? That is universe expanding. So what do we mean by? So ये भी important है, राइट. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, राइट. व्हाट इज एक्सपैंडिंग इन द यूनिवर्स? जैसे अब ऐसा है कि भाई हम तो एक्सपैंड नहीं हो रहे, राइट. वी आर सेम, राइट. एंड सन एंड अर्थ, उनका डिस्टेंस भी सेम है. सन एंड मून, उनका भी डिस्टेंस सेम है, राइट. हम बचपन से पढ़ते आ रहा है कि सन एंड अर्थ, सन एंड मून का डिस्टेंस इतना इतना है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है. Then what exactly is expanding in the universe? Right? That is the question, right? What exactly expanding in universe? Right? क्या चीजें expand हो रही है? Right? So that is galaxies. Right? Galaxies के बीच में स्पेस बढ़ते जा रहा है. So say मिल्की वे गैलेक्सी, राइट. हम लोग है मिल्की वे गैलेक्सी में, से हमारा नाइबर से एंड्रोमेडा गैलेक्सी और एनी अदर गैलेक्सी, राइट. टेक दिस इज अनदर गैलेक्सी, राइट. सो इनके बीच में गैप बढ़ रहा है, दैट इज सी गैलेक्सी से, दिस इज गैलेक्सी ए एंड दिस इज गैलेक्सी बी. सो आफ्टर सम इयर्स गैलेक्सी ए इज दिस मच एंड गैलेक्सी बी इज दिस मच, राइट. सो इनके उसमें एक्सपैंड हो रहा है. सो स्पेस इज एक्सपैंडिंग, राइट. जैसे यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, व्हाट इज एक्सपैंडिंग? सो जैसे टू गैलेक्सीज में से इट इज इंटर गैलेक्टिक स्पेस, राइट. सो इंटर गैलेक्टिक स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, इंटर गैलेक्टिक स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, राइट. सो दैट इज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, राइट. सो बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सही. वी आर नॉट एक्सपेंडिंग भाई, जैसे पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, वो क्यों एक्सपेंड नहीं हो रहा है? बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, राइट. जैसे ग्रेविटी है,
right? So gravity is not letting us expand. Or say so particles say we have strong force and weak force acting, electromagnetic force acting on it, right? So we are not expanding. So expanding universe means, so the space between galaxies are expanding, right? जो अब galaxies क्या है वो, that also we'll be studying. So what is exactly expanding in the universe? That is, the universe is what? Collection of many galaxies. We have seen trillions of galaxies are there. So galaxies के बीच में अब सारे, ऐसा नहीं है कि सारे गैलेक्सी से एक से दूर जा रही है. वी स्टडी दैट जो मिल्की वे गैलेक्सी है एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, दोस टू विल कोलाइड, राइट? एंड इट ऑल्सो डजेंट मीन कि सारे गैलेक्सी से उनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है, राइट? फ्यू गैलेक्सीज दे आर नियरिंग ऑल्सो, बट मोस्टली गैलेक्सीज आर एक्सपैंडिंग. इंटर गैलेक्टिक स्पेस है वो बढ़ रहा है, राइट? सो if we will be seeing जैसे मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी, दे आर, उनका स्पेस बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा. इनफैक्ट आफ्टर 4.5 बिलियन ईयर्स दे बोथ कोलाइड, राइट? तो दैट इज अ विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपैंडिंग यूनिवर्स. सो हमें एविडेंस मिला भाई, हबल ने गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया, राइट? एंड ही कंक्लूडेड दैट गैलेक्सीज are moving away from each other, and farther they are, the faster they are receding. So faster जितना दूर है, so मान ले से एक galaxy A is here and galaxy B is here, right? So now after say some, then galaxy C is here, right? So now after some years, so galaxy A is here, galaxy C is here, and galaxy B is here. So the farther they are, the more they are receding. That means universe is not only expanding, universe is expanding at a speeder rate, right? जो बाहर वाले वो और तेजी से expand हो रहा है, right? So वो प्रूव कर लिया गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रहा है. सो फ्रॉम दिस वी नो, सो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है. सो दैट मींस भाई बिग बैंग भी यही बोल रही है, राइट? बिग बैंग इज आल्सो सजेस्टिंग दिस, राइट? सो गैलेक्सीज आर मूविंग अवे एज द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. अब वो किस चीज के लिए मूव हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी. वी विल बी स्टडीइंग इट, राइट? सो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज द प्रूफ और एविडेंस फॉर बिग बैंग थ्योरी, राइट? ये देख सकते हैं हम, प्रूव कर सकते हैं भाई, एक गैलेक्सी देखो, देख ये इतना मूव हुआ. सो दैट मींस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, राइट? सो देन द नेक्स्ट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, राइट? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR. अगेन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम, राइट? इसका इमेज भी हम देखेंगे. देन लेट्स अंडरस्टैंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये होता क्या है, right? So cosmic microwave background radiation is a leftover radiation from the Big Bang. ठीक है, बिग बैंग हुआ, राइट? बिग बैंग हुआ तो रेडिएशन निकला, राइट? और रेडिएशन का लेफ्ट ओवर पार्ट, राइट? दैट इज कॉस्मिक का लेफ्ट ओवर रेडिएशन फ्रॉम बिग बैंग. सो इतना याद करना है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. अब माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं इसको वो भी समझ लेंगे, राइट? सो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इज द लेफ्ट ओवर रेडिएशन फ्रॉम द बिग बैंग. सो बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, सो देर इज सम रेडिएशन, राइट? उस रेडिएशन का एविडेंसेस हमने ऑब्जर्व किया, राइट? सो द रेडिएशंस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग वी हैव ऑब्जर्व्ड इन 1964. 1964 scientists for doing some other experiments, they accidentally found out this cosmic microwave background radiation, right? That is the leftover radiation from the Big Bang, right? So that is, you cannot see cosmic microwave background radiation with your naked eye, right? ये रेडिएशन है, रेडिएशन हम अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकता, बट इट इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. अब देखो वाई इट इज सपोर्टिंग बिग बैंग. देखो कोई भी चीज हर जगह है, राइट? हर जगह है, दैट मीन्स इट हैज टू बी से. जैसे यूनिवर्स इतना थी, ठीक है, फिर यूनिवर्स इतना बन गया,
फिर यूनिवर्स इतना बन गया, फिर यूनिवर्स इतना बन गया, फिर यूनिवर्स इतना बन गया, इतना बन गया, राइट, और बराबर बनते जा रहा है। अगर ये हर जगह स्प्रेड है, दैट मीन्स इट हैज टू बी देयर एट द स्टार्टिंग, राइट। जैसे मान ले इधर बर्थ हुआ, राइट, ये फिर एक्सपैंड हो रहा है तो भाई ये इस एरिया में ही होगा, राइट। अगर इधर मान ले इधर बर्थ हुआ, राइट, ये एक्सपैंड हो रहा है तो इस एरिया में हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स इफ इट इज समवेयर, if cosmic microwave background radiation is everywhere, that means it origin is to the big bang. So cosmic microwave background radiation है, ये एक जगह नहीं है, हर जगह। So that means it is the radiation left over from big bang, right? So that's what scientists have seen. It is everywhere in the universe. So everywhere in the universe suggests that its birth is at big bang, right? And big bang, it is invisible to humans, right? So invisible to humans, right? हमारा नेक्ड आई से देख से नहीं सकता, बिकॉज अगर देख सकते तो वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में आता, दैट ऑल्सो विल बी स्टडी, राइट, बिकॉज इट इज सो कोल्ड, जस्ट -2.75 डिग्रीज अबोव अब्सोल्यूट जीरो और -270। सो जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है दैट इज -271.15 डिग्री सेल्सियस है, राइट। दैट मीन्स जो दुनिया में, राइट, द लीस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के, राइट, और -273 केल्विन्स, राइट, और राइट। सो इससे ठंडा हो ही नहीं सकता। सो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है जस्ट 2 डिग्रीज लेस देन -273.15 डिग्री सेल्सियस, right? So the radiation is most visible in the microwave part of the electromagnetic spectrum, right? So that's why it is called cosmic microwave background radiation. So because it is electric spectrum में say we have say gamma rays, X rays, right? Gamma rays, X rays, so other UV rays, राइट, विजिबल रेस, जो विजिबल लाइट है, राइट, जो लाइट हम देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में, राइट। देन माइक्रोवेव्स, राइट, ऑल दीज आर देयर, राइट। सो दिस रेडिएशन इज मोस्ट विजिबल इन द माइक्रोवेव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हेंस इट इज कॉल्ड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिकॉज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये दिखता है, राइट। सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1964। 1964 में साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली कॉस्मिक, सो उधर से आ गया, राइट। लेटर टू प्रोब्स, द कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर कोब एंड विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, राइट, WMAP were carried out by NASA to find out the temperature variations as a measure of density differences in the universe, right? And it concluded that there is near uniform distribution of cosmic microwave background radiations in all directions with minute temperature variance. It aligns with the Big Bang theory. So Big Bang theory भी यही बोल रही थी, so cosmic microwave radiation भी यही बोल रहे थे। So these are the evidences which suggest that universe is expanding, right? Because cosmic microwave background radiation is spread everywhere in the universe. So that means it has to be there with the Big Bang origin से, right? So scientists ने देखा, right? Yes, it is present everywhere, right? So that means universe is expanding, right? शुरू से लेके अभी तक है, so universe is expanding. Now let's see question C. This is question asked in 2012 of UPSC, right? So which of the following are cited by the scientists as evidence or evidences for the continued expansion of universe? Continued expansion of universe, right? That is detection of microwaves in space, right? This is what? Cosmic microwaves background radiation. As detection of microwaves in space shows that universe is continuously expanding. Then observation of redshift phenomena in space, right? Redshift, blue shift, right? This is basically, redshift is basically when objects are moving away, जैसे galaxies
galaxies are moving away, right? Moving away, we see red shift. जो डॉपलर इफेक्ट है, राइट? डॉपलर इफेक्ट बहुत एप्लीकेशंस में यूज होता है. सो अगर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अवे, सो इट गिव्स रेड शिफ्ट. अगर पास में आ रहा है, इट गिव्स ब्लू शिफ्ट, राइट? सो observation of redshift phenomena in space is also escaped by galaxies are moving away, right? Moving away, that means universe is expanding, right? So it is then movement of asteroids in space. No, asteroids expansion of universe का कुछ लेना ही भाई. asteroids orbit में घूम रहा है, right? Then occurrence of supernova explosions in space. Again, this does not see, वो स्टार के बारे में. supernova भी हम पढ़ेंगे, right? So option 1 and 2 is correct. So now let's understand this, right? See, Big Bang theory states that universe began from an infinitely hot and dense single point known as singularity around 13.7 billion years ago, and since then it has been expanding in all directions. Then evidences for the continued expansion of the universe, that is Doppler shift or red shift or blue shift, right? It is nothing but by galaxies अगर दूर जा रहा है तो that is red shift, right? अगर वो आ रहा है तो so Doppler effect. See, red shift and blue shift describe how light changes as objects in space such as stars or galaxies move closer or farther away from us, right? The concept is key to charting the universe expansion. जब हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे, राइट? वो डॉपलर शिफ्ट को देख के डिस्कवर किया, राइट? दैट इज गैलेक्सीज आर मूविंग अवे. दैट मींस ही हैज सीन द रेड शिफ्ट, राइट? वो रेड कलर में शिफ्ट हो रहा था, राइट? रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, राइट? डॉपलर इफेक्ट, राइट? जैसे इन डेली इवेंट्स ऑल्सो विल बी using Doppler effect, right? So थोड़ा गूगल करके या यूट्यूब में छोटा वीडियो देख सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा. सो बेसिकली कोई भी पार्टिकल से, आप कार है, राइट? सो कार इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, राइट? सो विद द यूज ऑफ लाइट यू विल सी रेड शिफ्ट, राइट? रेड शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हो रहा है. अगर पास में आ रहा है तो वो ब्लू शिफ्ट में आएगा, राइट? सो हबल has observed, right, there is red shift. That means galaxies are moving away, right? So when an object moves away from us, Doppler shifted to lower frequencies, the light is shifted to the red end of the spectrum. So moving away from us, so galaxies are moving away from us, light is shifted to the red end of the spectrum as its wavelength get longer, right? If an object moves closer, Doppler shifts to higher frequencies, the light comes to the blue end of the spectrum as its wavelength gets shorter, right? Edwin Hubble was the first to describe redshift phenomena, right? That is galactic redshift, and tie it to expanding universe or galaxies are drifting apart, right? Galaxies are drifting apart. Then cosmic microwave background radiation, we have seen cosmic microwave background radiation is a leftover radiation from the Big Bang, right? Its discovery is considered as a landmark test for the Big Bang model of universe, right? Cosmic microwave background, by it is spread across the universe. So we can say भाई ये शुरू हुआ, so universe भी expand हो रहा है, right? Big Bang theory में ये है. So these are the things, right? Right? So there is image also, right, of cosmic microwave background radiation. Let's see that. See, evidence supporting Big Bang theory, expanding universe, and cosmic microwave background radiation we have discussed. See, this is cosmic microwave background radiation, right? Cosmic microwave background radiation, right? इसको इतना basically the color, right? Say this scene, right? Blue color, there is temperature variation, right? This color, there is temperature variation, and this temperature variation is present across the universe, right? So this temperature variation or this temperature variation से basically इस color से हमें क्या दिख रहा है?
there are variation, variation, variation in density, density of particles across the universe, and this variation is same, right? So उससे हमें कि भाई यूनिवर्स में चीजें कंटिन्यूअसली एक ही पैटर्न में, राइट? सो दैट इज पॉसिबल कि छोटे से शुरू होके बड़े से जा रहा है, राइट? एवरीवेयर इट इज सेम, दैट मींस यूनिवर्स started from the point and it started expanding in all the directions, right? All the directions. So that's why we see same pattern of temperature variation. जैसे 2 डिग्री वेरिएशन ही है, राइट? टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस द यूनिवर्स, राइट? सो दैट शोज कि भाई यूनिवर्स शुरू हुआ, राइट? फिर उधर से एक्सपैंड होने लगा इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? ये कॉस्मिक बैकग्राउंड ये राउंड बॉल में भी आ सकता है, राइट? बिकॉज वी डोंट नो द शेप ऑफ द यूनिवर्स, राइट? टू अंडरस्टैंड इट वी हैव रिप्रेजेंटेड इट जैसे वर्ल्ड शेप जैसे, राइट? सो दैट इज द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. See, now we have discussed what is universe, right? Universe is collection of solar systems, right? Which is collection of galaxies, right? Intergalactical space, etc., right? See, universe has three parts. See, first is the visible universe, which we can see, right? That is just 5%. See, visible universe is, say, our earth, right? Earth, everything which we see, right? Earth में plants, living things, non-living things, right? Light, rays, etc., everything which we see, right? जैसे sun, right? And all the other planets in the solar system, right? Revolving Mercury, Venus, etc., right? And all the other stars, right? In galaxy there are many stars, right? And all the galaxies, right? All the galaxies and all the stars in the galaxies and all the planets revolving around those stars, right? And all the asteroids, okay? Everything which we can see, right? With our naked eye or with some telescope, right? Or say the pulsars, or say the neutron stars, right? Or say the black holes or surrounding areas, right? Which we can see, right? All these things, right, are made up of protons, neutrons, electrons से जो भी एटम से बना है, right? हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी, all the visible part, right, is just 5% of the universe, right? So the visible part is just 5%. We are talking about, say, how many galaxies are there? Say trillions of galaxies are there, right? All these trillions of galaxies and all the solar systems, all the planets in those galaxies, they are just 5% of the universe, right? The remaining percent is the dark matter and the dark energy, right? So visible universe is just 5%. कुछ भी चीज हम देख रहे हैं, that is just 5%. And next is dark matter. So dark matter is the 27% of the universe is dark matter. So dark matter is what? We don't know. What is it? We know it doesn't interact with the light, right? So हम देख ही नहीं सकते. जैसे the room in which you are sitting, there is dark matter present in it, right? But it is not a the particle जो protons, neutrons, electrons से atoms बनता है, right? जो particles है, जो हम normal eye से नहीं देख सकते हैं, even microscope वगैरह से नहीं देख सकते हैं, right? That is dark matter. What is it? We don't know as of now. But we know. How do we know the dark matter? We know it because, say, galaxies are there. Say, let's take, say, this is a galaxy, say Milky Way galaxy. So Milky Way galaxy is in spiral shape, right? We will be discussing galaxies किस shapes में possible होता है, right? So अब galaxies has stars, right? Stars and stars के surrounding planets वगैरह रिवॉल्व हो रहा है, एंड ईच गैलेक्सी, जैसे अपना मिल्की वे गैलेक्सी में देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, राइट? सो दीज स्टार्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी. सेंटर ऑफ गैलेक्सी में ब्लैक होल होता है, दैट आल्सो वी विल स्टडी, राइट? सो द नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर
right? The amount of gravity, gravity which holds them together, right? Which holds them together is not sufficient, right? To hold these together, right? Gravity sufficient नहीं है या कुछ ना कुछ तो होगा, right? That is playing a part in holding all the solar systems of galaxies together, right? गैलेक्सी एक वे में घूम रही है, राइट? It is not possible just with the gravity, right? So from that we know, see, there is some other matter, that is dark matter, which is not visible neither with the naked eye nor with any other scopes. अभी हमने डिस्कवर नहीं किया, वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट? डार्क मैटर क्या होता है, कैसे है, क्या स्टेट है, वी आर working on it to find out what is dark matter. So that dark matter is 27% of the universe, right? Which we cannot see. The room in which you are there, there is dark matter present in it. And every time, in every second, dark matter is passing through your body also. But the matter is so so less interactive that we don't feel it, right? So it is present everywhere in the universe, right? But we cannot see it. So that's why it is called dark matter, because it doesn't interact with the light, or it doesn't interact with other forces, right? So that is dark matter is 27%, right? Then the next is dark energy. Dark energy is 68%. So dark matter is some kind of matter, right? जैसे normal matter जो visible matter है, that is made up of atoms which has nucleus, right, surrounded by electrons, right? That is the normal matter. All these are made up of these atoms, right? Dark matter is made up of something else which we don't know, right? So ये dark matter है. Then there is dark energy, right? So dark energy is what, right? It is an unknown energy, राइट? क्या है, वी डोंट नो. इनफैक्ट डार्क मैटर के बारे में हमें कुछ तो पता है, ये दिस इज सम काइंड ऑफ मैटर. डार्क एनर्जी के बारे में वी डोंट नो, राइट? इट इज सम काइंड ऑफ एनर्जी. एंड व्हाट इज दिस एनर्जी इज प्लेइंग, व्हाट दिस एनर्जी ये है, वो कहां से पता चल रहा? वी नो इट फ्रॉम द expansion of universe. So dark energy is playing important role in the expansion of universe. So universe is constantly expanding, constantly accelerating with the help of dark energy. So dark energy is the reason for expansion of universe. So since dark energy is reason for the expansion of universe, it is also present everywhere because its spread is distributed everywhere. So because in all directions universe is expanding and it is constant, right? Even with the expansion of universe, ऐसा नहीं है कि edges में ज्यादा है, right? Dark energies जो इधर ज्यादा है, जो starting point में जितना है, जैसे बिग बैंग में dark energy जितना है, right? And the same energy is present across the universe, right? So that is dark energy. Dark energy का main purpose is expanding the universe. Because of that energy, the universe is expanding and expanding at equal rate in all directions, right? So that is dark energy. Albert Einstein, right? In so that we will be discussing. So let's go to the notes and study about these three things, right? Universe has visible universe 5%, dark matter 27%, and dark energy 68%. So the visible universe including Earth, Sun, other stars, and other galaxies, and everything, right? Asteroids, meteoroids, right? Neutron stars, supernovas, everything which we can see, right, is made up of protons, neutrons, and electrons. Basically made up of atoms. Atoms are made up of protons, neutrons, and electrons bundled together into atoms, right? ये सब इन्हीं से बने, right? That is visible matter. This ordinary matter, also called baryonic, makes up 5% of the mass of universe. So the visible universe is just 5% of the universe, right? 5% of the universe. So the rest of the universe appears to be made of mysterious invisible substance
called dark matter, and a force that repels gravity known as dark energy. Repels gravity को repel करके यूनिवर्स को expand कर रही है, right? So that is dark energy. So let's understand about dark matter. See, dark matter is, that is, galaxies in our universe seem to be achieving an impossible feat, right? So they are rotating with such speed that the gravity generated by their observable matter could not possibly hold them together. So जैसे gravity, जैसे galaxies है, galaxies can be circular shape also with black hole and surrounded by stars, राइट? स्टार्स एंड स्टार सिस्टम, इधर स्टार है, फिर स्टार के अराउंडिंग प्लैनेट्स वगैरह घूमेंगे, और गैलेक्सीज कैन बी दिस शेप आल्सो, राइट? वेयर ब्लैक होल इज देयर, राइट? बाकी इधर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, स्टार्स सोलर सिस्टम्स, राइट? स्टार्स सोलर सिस्टम्स, राइट? सो और गैलेक्सीज रोटेट होंगे, सी सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के अराउंड बाकी सब चीजें रोटेट होंगे, जैसे दी स्टार्स, राइट, रोटेट अराउंड द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल. जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में our sun is also revolving around the center of Milky Way galaxy, right? That also we will be studying, right? But what we have seen is, it is galaxies are achieving an impossible feat because with the amount of matter they have, with the rotation they are doing with such high speeds, they cannot hold together, right? Gravity hold नहीं कर सकती. अब gravity नहीं hold कर रही, तो what is holding them? That is dark matter. Dark matter is holding. They should have torn themselves apart long ago. Scientists theorize that something we have yet to detect directly is giving these galaxies extra mass, generating the extra gravity they need to stay intact, right? So this strange and unknown matter is called dark matter since it is not visible. So ये लाइट से देख नहीं सकते, राइट? लाइट से इंटरैक्ट नहीं कर सकता है, सो दिस इज कॉल्ड एज डार्क मैटर. सो अनलाइक नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर डज नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट? डज नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो नॉर्मल मैटर इंटरैक्ट्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दिस means this does not absorb, reflect or emit light, right? So dark matter light से भी interact, no, it doesn't absorb, right? It doesn't reflect or it doesn't emit light, so making it extremely hard to spot, right? In fact, researchers have been able to infer the existence of dark matter only from the gravitational effect it seems to have on visible matter. Visible matter पे gravitational effect कुछ ना कुछ मैटर कर रही है, तो उससे किया. So dark matter seems to make up 27% of the universe, right? So that is dark matter, right? We cannot see, it does not interact with light, it does not interact with electromagnetic forces, right? So what is it? We don't know. We are yet to find out what is dark matter, right? Then next is dark energy. Dark energy. So dark energy is an unknown form of energy. Unknown form of energy that affects the universe on the largest scales, right? Unknown form of energy. कुछ एनर्जी है, हमें पता नहीं क्या एनर्जी है. जैसे ग्रेविटी क्या है, right? Some form of energy, right? We don't know. Like dark energy also unknown form of energy that affects the universe on the largest scales, right? Expansion of universe, the most extreme largest scales में भी काम करेगा, right? Dark energy was first hypothesized by Albert Einstein in 1917 and was represented by the term cosmological constant. However, he later rejected the idea of cosmological constant. So cosmological constant कुछ है, right? उसके इक्वेशन में लगाया, बट बाद में इसको रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ cosmological constant कुछ नहीं है, right? But subsequently, right, direct evidence for the existence of this component was dubbed dark energy was first presented in 1998 में साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया from the measurement of supernovas which showed that the universe does not expand at the constant rate, rather the universe expansion is accelerating, right? जैसे मान ले यूनिवर्स से कल इतना एक्सपैंड किया, राइट? अब परसों इतना एक्सपैंड करेगा, उसके बाद और ज्यादा एक्सपैंड करेगा, बिकॉज द यूनिवर्स एक्सपेंशन इज एक्सेलरेटिंग, इट्स नॉट कांस्टेंट रेट में,
राइट, ये नहीं कि एक दिन में इतने किलोमीटर एक्सपेंड हो रहा है, राइट, इट इज एक्सेलरेटिंग. सो द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स and its acceleration can be measured by observations based on Hubble's law, right? Hubble constant, Hubble law create किया, उससे we can measure यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड हो रही है, राइट. सो दीज मेजरमेंट्स टुगेदर विथ other scientific data have confirmed the existence of dark energy and provide an estimate of just how much of this mysterious substance exists, right. So उसने confirm किया dark energy को. So dark energy makes up to 68% of universe and appears to be associated with the vacuum in space, right. So it is distributed evenly throughout the universe, evenly throughout the universe. That means not only in space but also in time. In other words, its effect is not diluted as the universe expands. So it is जो यूनिवर्स जहां शुरू हुआ उधर भी डार्क एनर्जी उतने रेंज में है, और जहां एक्सपैंड हुआ जैसे यूनिवर्स हैज डन लाइक दिस, राइट, राइट, इससे एक्सपैंड हो रहा है. सो डार्क एनर्जी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, नॉट जस्ट इन टाइम. सो इधर भी डार्क एनर्जी थी, इधर भी डार्क एनर्जी थी, इधर भी डार्क एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर भी डार्क एनर्जी थी. सो expansion, it is evenly distributed in time and space, right. So dark energy is the name given to the mysterious force that's causing the rate of expansion of universe to accelerate over time, right. To accelerate rate of expansion of yours to accelerate over time. So dark energy is one of the reason why the universe is expanding, right. With the use of dark energy, universe is expanding, right. So that is 68% of the universe, right. So that is with respect to visible universe, dark matter and dark energy. See, now let's look at galaxy, right? So galaxy क्या है? We'll also study about Milky Way galaxy and Armada galaxy, right? The neighbor galaxy of Milky Way galaxy. See, galaxy is what? See, we have seen. See, universe, universe, right? Universe has somewhere like trillions of galaxies, trillions of galaxies, right. And each galaxies have some millions and billions of stars, billions of stars based on the size of galaxy, right. So छोटा गैलेक्सी है तो मिलियंस में है स्टार्स, राइट. बड़ा गैलेक्सी है तो बिलियंस में स्टार्स है, एंड और बड़ा गैलेक्सी है तो ट्रिलियंस में भी स्टार्स है, राइट. सो यूनिवर्स, say universe is this, let's take universe is this. So universe has many galaxies, so let's take galaxies as this, right. Or say galaxies can be like this also, right. Or galaxies like this, right, right. Galaxies, small galaxies, big galaxies, right. So and there are trillions of galaxies like this. In universe there are trillions of galaxies, and each galaxies have millions to billions to trillions of stars. जैसे इस गैलेक्सी में से let's take star is here, and star के surrounding planets will be revolving, right. Star and planets, right. So that is what galaxy is, right. There are dwarf galaxies, छोटे galaxies है, and there are big galaxy, right. And galaxies में क्या क्या है? So galaxy is what? Huge collection of huge collection of gas, dust, right. Billions of stars and star का solar systems include planets, right. Solar systems include planets, right, or asteroids or meteoroids, right, or interstellar space, etc. All these things, and all these are held together by gravity, right. Gravity, and all the
galaxies, right? All the big galaxies, see, dwarf galaxies में हो सकता है black holes ना हो, right? All the big galaxies held by gravity. Gravity of what? Gravity of, जैसे, so let's say sun है, right? Why planets are revolving around the sun, right? Planets are revolving, say Earth is revolving around the sun. Why it is revolving? Because of gravity, right? That we will be studying, right? So because of gravity, it will be revolving. And gravity of sun is creating gravity. So gravity is what? Wrapping of time and space, right? We will be studying, right? So similarly, at the galaxy center is black hole, right? All the major galaxies, जो भी big galaxies, जैसे अर्थ का सेंटर, जो मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर में है ब्लैक होल, दैट इज सेगिटेरियस ए, राइट? सो सेगिटेरियस, सो गैलेक्सी सेंटर हैज ए ब्लैक होल एंड दिस ब्लैक होल्स ग्रेविटी होल्ड द गैलेक्सीज टुगेदर, राइट? ब्लैक होल क्रिएट ए ग्रेविटी, वो कैसे विल बी स्टडीइंग, राइट? ग्रेविटी को भी अच्छे से समझ लेंगे, राइट? सो ग्रेविटी होल्ड्स ऑल द गैलेक्सीज, देयर स्टार्स, their solar systems, etc. together, right? So now let's see Milky Way galaxy ka image, right? We will understand. See, this is the image of Milky Way galaxy, right? Milky Way galaxy, and Milky Way galaxy mein, where is our sun? See, our sun is here, right? Our sun is here, and this is the center of Milky Way galaxy. This is the center of Milky Way galaxy, and here there is black hole, right? All major black hole, big galaxies have black holes at the center, right? And these black holes, because they have huge mass, they cover huge area, they wrap space time, right? It creates gravity. So our sun, you see, this is spiral galaxy. जो Milky Way galaxy है वो spiral galaxy. So let's also discuss the types of galaxies, right? So galaxies by their shapes, they can be three types. First is spiral galaxies, right? Then the second is elliptical galaxies, or the third is irregular galaxies, right? Galaxies ka shapes, right? So spiral galaxies are something like this. See, center have black hole and stars are in the arms, right? The spiral arms में stars and उनका solar systems वगैरह होंगे, right? And all are held by gravity, right? ठीक है, कितना भी arms हो सकता है, right? And इसमें बड़ा छोटा, like dwarf galaxy से छोटा black hole होगा, right? Arms भी छोटे होंगे, right? और bigger galaxies will have more stars, right? More solar systems, right? And then there are elliptical galaxies, see, center with black hole and stars are distributed like this. Stars है उनका solar systems, right? Stars उनका solar systems, stars उनका solar systems, and other stars, right? And their solar systems, other stars, their solar systems, stars, solar systems revolving around the center of the galaxy with black hole, right? And irregular galaxies can be of any shape, say center ऐसा है, right? And galaxy कभी spiral है, कभी इधर elliptical है, right? Elliptical में भी, right? They are can be of this shape, irregular galaxies, right? So these are shapes of galaxies. Now, if we come to Milky Way, right? So Milky Way galaxy, our Earth is in Milky Way galaxy, right? Milky Way galaxy, right? Earth is in Milky Way galaxy. So Milky Way galaxy is a spiral galaxy, right? Milky Way galaxy is a spiral galaxy. Now let's understand about the Milky Way galaxy, right? Milky Way galaxy, and let's also discuss about Andromeda galaxy, which is the nearest big galaxy of our Milky Way galaxy, right? So see, Milky Way
galaxy, right? And then is Andromeda galaxy. Andromeda galaxy, right? इससे galaxies का थोड़ा समझ लेते हैं. See, Milky Way galaxy is what? Spiral galaxy, right? At the center there is black hole, right? That is Sagittarius A black hole, right? उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, right? No need to worry, right? Spiral black hole, right? And इस galaxy में there is one arm that is Orion arm, right? जो इनको बोलते हैं आर्म्स, राइट? सो एक आर्म है दैट इज ओरियन आर्म. ओरियन आर्म का आउटस्कर्ट्स में देयर इज आवर सन एंड आवर सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ, राइट? सो दिस इज मिल्की वे गैलेक्सी. एंड नेबर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है अपना गैलेक्सी, उसके नियरेस्ट बिग गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, राइट? एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगेन it is also a spiral galaxy, right? It is also a big galaxy. सेंटर में बिग होल है, सुपर मैसिव बिग होल, राइट? दे आर वेरी बिग, राइट? सुपर मैसिव कैसे? जैसे सजिटेरियस ये है ब्लैक होल, राइट? इट इज 4 million times the mass of sun, right? And mass of the sun is what? Sun is 109 times the diameter of earth. जैसे अर्थ इतना है, राइट? तो सन इतना है, राइट? एंड सन इतना है तो जो सेजिटेरियस ये ब्लैक होल है, राइट? ब्लैक होल इज समथिंग इतना बिग, राइट? और सो 4 million टाइम्स, इससे भी ज्यादा, राइट? जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ दैट ब्लैक होल, राइट? 4 million टाइम्स दैट ऑफ सन, राइट? 4 million टाइम्स दैट ऑफ सन, राइट? जो भी ब्लैक होल है सेंटर में. सो दिस इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी. एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में भी ब्लैक होल होंगे, राइट? ब्लैक होल विच वुड बी बिगर, राइट? सो दिस इज वन थिंग. देन एज ऑफ आवर गैलेक्सी, एज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज 13.6 billion years. 13.6 billion years. See, we have discussed, ठीक है? शुरू हुआ 13.8 billion years ago, right? And soon after 300 million years एंड 500 मिलियन ईयर्स के बाद गैलेक्सीज फॉर्म होना शुरू हो गया. सो आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, राइट? अभी से लेके 13.6 बिलियन ईयर्स पहले अपना मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हुआ, राइट? आवर अर्थ इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, राइट? आवर अर्थ, ठीक है, अर्थ इज 4.5 billion years old. 4.5 billion years old, right? So that means our Milky Way galaxy is one of the oldest galaxies also. 13.6 billion years ago form हुआ, right? On the other hand, Andromeda galaxy age is 10 billion years. 10 billion years, right? So ये basically Big Bang का 3.6 billion years के बाद form हुआ, right? Right? So that means our Milky Way galaxy is older than Andromeda galaxy, right? Then size-wise, see, we are talking about galaxies, right? Galaxies, अब black hole ही इतना बड़ा है, right? So galaxies का size would be, अब size को हम करेंगे 1,05,700 light years wide. Light years wide, right? So this is the, अब क्या है इसका wide? We are talking in light years. Say that is एक साल में लाइट कितना दूर जा सकती है, राइट? कितना दूर जा सकती है एक सेकेंड में? इन 1 second light can travel in say 3 lakh kilometers. 3 lakh kilometers में ट्रैवल करेगी, राइट? एक सेकेंड में. एंड 1 ईयर में, राइट, मल्टीप्लाई इट विथ 3600, राइट? सो लाइट इन ईयर इट ट्रैवल. सो अब एक साल में, राइट, इतने साल में, 1 लाख साल में लाइट कितना दूर ट्रैवल कर सकती है, राइट? उतना बड़ा है, राइट? दैट मीन्स टू क्रॉस, right,
अगर हमें क्रॉस करना है रॉकेट से, राइट, रॉकेट से मिल्की वे गैलेक्सी से, ऐसा है, राइट, इस एंड से इस एंड तक ट्रैवल करना है, राइट, इट विल टेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। अगर लाइट को ट्रैवल करना है तो वो 1 लाख लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेंगे, राइट, इट विल टेक 1 लाख लाइट ईयर्स, राइट, 1 लाख ईयर्स लाइट के स्पीड में ट्रैवल करेंगे तो, राइट, विथ आवर बसेस एंड आवर रॉकेट्स एंड ऑल, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू क्रॉस, राइट, इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट, उतना बड़ा है, राइट, जस्ट इमेजिन, राइट। देन द साइज ऑफ Andromeda galaxy is 2,20,000, right, light years wide. So that is Andromeda galaxy is bigger than our Milky Way galaxy, right. Then number of stars in our Milky Way galaxy is 0.4 trillion stars are there, and number of stars in Andromeda galaxy, right, जैसे सन लाइक स्टार्स है अपने मिल्की वे में ही 0.4 ट्रिलियन स्टार्स है सन लाइक, and each sun like star has planets also, so there are 0.4 into some 7, 8, 9, 10 planets, right. So number of stars are in Andromeda galaxy is 1 trillion stars, 1 trillion stars. So just imagine, right, how insignificant we are, right, and also think इतने stars है, right, possibility of life on those stars, right, possibility of higher intelligence forms, right, human से भी और higher intelligence forms हो सकता है, right. So that is there, right, and then अब जो दो गैलेक्सीज है, राइट, दो गैलेक्सीज के बीच में, राइट, दो गैलेक्सीज है दूर में है, राइट, एंड these two galaxies are at a distance of 2.5 million light years away, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, जैसे लाइट के स्पीड से जाएंगे, राइट, से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी, राइट, एंड वी आर ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट, पर सेकेंड। जो हम लोग फास्टेस्ट ट्रेन का बात करते हैं दैट इज 500 किलोमीटर्स पर आवर, राइट, दिस इज 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड पे इफ वी स्टार्ट। So from here to here, right, from Milky Way galaxy to Andromeda galaxy, light के speed से जाएंगे तो it will take 2.5 million years, 2.5 million years। अगर राउंड ट्रिप मारना है, ठीक है, जाके वापस आ गया, so it will take 5 million years, 5 million years, right। जैसे मान ले आपने एक स्पेसक्राफ्ट क्रिएट किया, राइट, स्पेसक्राफ्ट स्पीड में if we go, right, and if we go and return back, right, अब इधर कितने जनरेशंस अर्थ में कितने जनरेशंस हो सकता है ह्यूमैनिटी भी खत्म हुआ हो, राइट, 5 मिलियन ईयर्स लगेगा, राइट, बट एक्चुअली क्या होता है, राइट, इफ वी ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे, दैट इज इफ वी कैन ट्रैवल, स्पेसक्राफ्ट बिल्ड किया विच कैन ट्रैवल एट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट। When we travel at speed of light, the distances shrink, right? The distances between the space-time wrap, that is special theory of relativity of Einstein, right? So the distances shrink. So this distance 2.5 kilometer light years, it shrinks. So they become distance कम हो जाएगा, right? अब कैसे कम होगा वो let's discuss that also, right? You will get clarity. जैसे हम लोग व्हाट वी आर डूइंग एट लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, राइट, एट लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, सो साइंटिस्ट दे मेड ए पार्टिकल, राइट, ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 99.99999%
स्पीड ऑफ लाइट ये एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट ने, राइट। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर इज ए सर्किल राउंड वन, राइट, विथ 27 किलोमीटर्स, 27 किलोमीटर्स है। एंड 27 किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है, 99.69 स्पीड ऑफ लाइट, राइट। स्पीड ऑफ लाइट में नहीं है, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, 99.9999% स्पीड ऑफ द लाइट, दे मेड ए पार्टिकल ट्रेवल एट 99.99% स्पीड ऑफ द लाइट। तो क्या हुआ, ये 27 किलोमीटर्स, राइट, हैज श्रिंक बाई factor of by factor of 7,000, by factor of 7,000. So the 27 kilometers ring has become 4 meter, right? अब देखो, right? So when you travel near to speed of light, right? So the 27 kilometers ring has become a 4 meter. So that is the miracle. When you are tackling with speeds of light, right? When you travel at speed of light, the distances shrink. So 27 kilometer जो large hadron collider है, right, that has become a 4 meter, right, 4 meter, right. So when you travel at speed of light, spacecraft create किया at a speed of 99.99% of the speed of the light, right. अब अगेन आइंस्टाइन बोलता है नथिंग कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो पार्टिकल को स्पीड ऑफ द लाइट पे मूव किया, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल नियर जीरो मास, राइट। आइंस्टाइन बोलता है एनीथिंग विथ जीरो मास, सी लाइट इतना स्पीड में ट्रैवल इसीलिए कर सकता है बिकॉज लाइट इज जीरो मास, राइट। लाइट का मास इज जीरो बिकॉज इट इज जस्ट फोटॉन्स है, वेव्स। लाइट इज नथिंग बट पार्टिकल मूव नहीं कर रही है, लाइट इज ए वेव, राइट। सो लाइट हैज जीरो मास, दैट्स व्हाई इट कैन ट्रैवल एट ए स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। एंड आइंस्टीन ये भी बोलते हैं एनीथिंग विथ मास कैन नॉट ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट। सो अब स्पेसक्राफ्ट हम अगर हमें क्रिएट करना है तो इट हैज टू बी वेरी लेस मास स्पेसक्राफ्ट, राइट। देन अगर किया तो इफ वी ट्रैवल 99 स्पेसक्राफ्ट 99.99% स्पीड में ट्रैवल करेगा, सो इट विल टेक, राइट, इट विल reduce the distance, right? So it will take 2 minutes, 2 minutes to travel, right? जैसे जाने के लिए 1 मिनट लगेगा, आने के लिए 1 मिनट लगेगा, राइट, लाइट के ट्रैवल स्पीड में। बट हियर इज अ ट्रिक, अब आपको 2 मिनट्स लगेगा, राइट, बट ये 2 मिनट्स इन टाइम स्पेस में, बट फिर अर्थ में वापस आओगे तो अर्थ में इट वुड हैव 4.5 मिलियन ईयर्स वुड हैव पास्ट, राइट। अब वो टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ते हैं, राइट। टाइम इज नॉट कांस्टेंट, राइट। सो आप जो स्पेसक्राफ्ट में है उनके लिए तो 2 मिनट में आ जाएंगे, 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में वापस आ जाएंगे। बट द मोमेंट यू रीच अर्थ, ठीक है, अर्थ में 4.5 मिलियन ईयर्स पास हुए होंगे, राइट। आप बता नहीं सकते आपने क्या देखा उधर, क्या कैसे किया, राइट। सो दैट इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स का ये चीजें समझना जरूरी है, राइट। सो दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू गैलेक्सीज, गैलेक्सीज का डिस्टेंस, व्हाई वी कैन नॉट ट्रैवल, राइट, बिकॉज अगर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाना है, राइट, अभी तक ह्यूमंस जस्ट क्रॉस्ड, राइट, जस्ट क्रॉस्ड आवर solar system, right. Voyager 1, Voyager 2, they went into interstellar space, right. तो अभी अगर उसके लिए जाना है तो that also will be slowly discussing it. So that is with respect to galaxies and all. And one more thing is, so one more thing also we need to know is, so जो Milky Way galaxy है, Andromeda galaxy है, they are not moving away, right. जैसे हमने लिया यूनिवर्स एक्सपैंड, if universe is expanding that means galaxies are moving away, right. The distance between galaxies are increasing,
On the other hand, जो मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सीज है, their distance is not increasing, right? On the other hand, their distances are shrinking, right? That is Andromeda galaxy, Andromeda Meda galaxy is moving towards 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 Milky Way galaxy at 110 kilometers per second, right? Second ka 110 kilometers it is coming. So in scientists are predicting in 4.5 billion years, right? The Andromeda galaxy and the Milky Way galaxy, they are going to collide, right? And they are going to collide and they make new galaxy or they make something else. We don't know what they make. We don't know, right? It is predicted that in 4.5 billion years, they are going to collide, right? They are moving towards, right? So now that is with respect to galaxies. So now let's go to the class notes and read the information regarding galaxies. See, right? See, universe. We have discussed universe is made of galaxies, right? There are 200 billion to 2 trillion galaxies in the observable universe, right? And that is galaxies in our observable universe, right? The universe which we can observe, right? So, and each galaxy has few hundred million stars. Dwarf galaxies में millions of stars है and 200 trillion stars. Giant galaxies में trillions of stars है, right? So that means there are trillions of stars, right? And in that, our sun is one of the star, and in that star, our Earth is one planet, right? So there is nothing serious about our Earth, right? We are just some insignificant beings in an very insignificant star, right? So then see galaxy, right? Galaxy C. There is a statement of Stephen Hawking which says that humans are just a chemical scum on the surface of a typical planet that is in orbit around a typical star on the outskirts of a typical galaxy, right? हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के आउटस्कर्ट्स में हैं, right? So let's not be arrogant कि हम अकेला है, right? Civilization अकेला civilization है, right? That is his way of saying, right? Then galaxy is, see galaxy, right? A galaxy is a huge collection of gas, dust, billions of stars and their solar systems all held together by gravity. All held together by gravity. Gravity क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, right? Right? So, and galaxies can be spiral, elliptical or irregular shapes we have already discussed, right? Then there is dwarf galaxies. See, dwarf galaxies seem to be small galaxies made up of billions of stars, right? Trillions of stars नहीं है, छोटे galaxies है, billions of stars है, right? In comparison to their larger cousins, which have hundreds of billions of stars, dwarf galaxies usually have only few billions of stars, right? छोटे galaxies है, right? Several of these dwarf galaxies orbit larger galaxies like Milky Way or Andromeda galaxy. So Milky Way and Andromeda galaxy are big galaxies, right? Billions and trillions of stars है, right? So जो dwarf galaxies है वो orbit करता है bigger galaxies को, right? And dwarf galaxies are most common type of galaxies in the universe. भाई छोटे galaxies most common है, right? But their low luminosity, low mass and small size make them difficult to detect, right? भाई difficult to detect है but यही ज्यादा है, right? Bigger galaxies थोड़ा कम है, right? And about Milky Way galaxy, Milky Way galaxy is a large spiral system. So spiral galaxy है made up of several hundred billions of stars of which one of which is sun, right? एक sun भी है billions of stars में trillion 0.4 trillion stars है उसमें एक sun है, right? So spiral galaxies are characterized by a central bulge surrounded by a spiral arms that extend outwards
The arm contain a concentration of stars, dust, gas, right, giving the galaxy its distinctive spiral appearance when observed from certain angles, right. Then our solar system is located in one of the Milky Way spiral arms known as Orion arm or local spur, right. So we are in the local spur, Orion arm बोलते हैं, right. At the center of Milky Way is a region known as Sagittarius A. Sagittarius A, there is a supermassive black hole, right. So at the center of every big galaxy there is a supermassive black hole, right. Supermassive black hole, right. जो अपना मिल्की वे गैलेक्सी में है उस ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए, right. So this supermassive black hole has a mass equivalent to about 4 million times that of our sun. So जो ब्लैक होल है वो 4 million times that of sun, जैसे सन इतना है, ठीक है, our black hole Sagittarius A is this much, right. उससे भी बड़ा, millions, 4 million times that of sun, right. So it was discovered through observations of the motions of stars orbiting around an invisible and extremely compact object, indicating the presence of massive gravitational source characteristic of a black hole. So black hole has massive gravitational force, right. Then next is Andromeda galaxy, right. So Andromeda galaxy is the nearest large galaxy to the Milky Way galaxy, located approximately 2.5 million light years away and visible with the naked eye in dark skies. So 2.5 million से naked eye से भी देख सकते हैं रात में इसको, right. It is also a spiral galaxy, Andromeda galaxy. Andromeda galaxy as well as Milky Way galaxy are anticipated to collide in 4.5 billion years, resulting in a giant elliptical galaxy. Resulting in a giant elliptical galaxy form होगा, right. Then Andromeda galaxy का differences, right. And इन दोनों की galaxies के बीच में, right, जो distance है 2.5 million light years है उसको बोलते हैं intergalactic space, right. दो galactic के बीच में, so intergalactic space, right. So बाकी सब all things we have discussed, right. So that is there. Then next is supernova, right. So let's understand supernova क्या है, then we will be coming to the notes.